Shall we start? Okay, so you should be on your page 40 of the textbook. We had already started with the chapter number 7, environmental changes. And we learned that how because of human activities, because of human interference, the environment is changing day by day, year by year. Okay, and the main reason is the human activities. There are some other natural reasons also, but they do not affect a lot. Environment, anything that surrounds us, which generally includes the natural environment. Then we also learned about the difference between weather and climate. If it is for a short time, it is known as weather, and for a long time, it is known as climate. And climate is generally calculated for a period of 35 or more years. Then we learned about the greenhouse farming. The farming which is done in which areas? Yes. The cold regions which receive very less amount of sunlight, there the greenhouse farming is done. And then we learned about the greenhouse effect. Greenhouse effect results in global warming, while greenhouse farming is something positive. So don't get confused between greenhouse effect and greenhouse farming. Okay? Then ग्लोबल वार्मिंग जो हमने लर्न किया था, वी रेड सो मेनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस दैट हाउ डे बाय डे द एरियाज इन द वर्ल्ड, somewhere the ice is melting, somewhere there is snowfall in the desert, somewhere the temperature is increasing, somewhere the snow river is getting melted, etc., etc. The news headline which overall shows that the world is facing the problem of global warming. Okay, global warming overall means the earth gets heated up. जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. Okay, so why does the earth gets heated up? Earth इतना heat temperature increase क्यों होता है? That is our next topic. See the title of yes. So greenhouse effect. Effect मतलब some of the gases in the atmosphere increase. Now gases मतलब those gases which are harmful for our health. जब harmful वाले gases increase होते हैं, they result into global warming. Now which are these harmful gases that we are going to learn in this topic? Okay, keep a pencil in your hand. The greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, which is known as CFC, and halocarbons play an active role in the greenhouse effect. ये सभी gases, when they increase in the atmosphere, the temperature rises. The increase in proportion of these gases leads to the problem of global warming and climate change. This is the reason why the climate keeps on changing. Okay, now all these gases we are going to learn one by one, and you can see there is one sentence given to us in bold. Increase in temperature by 0.6 degree in last 100 years. और ये 0.6 अभी धीरे धीरे ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, because you see that the temperature is continuously increasing. I think you all have experienced this thing. Yes, I cannot see Dharmaj. And Astha is raising the hand. Yes, Astha. Okay, now you can see the earth, और earth के बाजू बाजू में सिर्फ poisonous gases ही है. Carbon dioxide 64%, CFC 65%, halocarbon 0.5%, methane 10%. Can you see the diagram given? Yes, and you can see that earth. Yes, you can see that the earth is surrounded only by the greenhouse gases. इसलिए ये ग्रीन कलर का दिया है ना. Now see the last line given to us. Each person in the world releases 4.5 metric tons of carbon dioxide. Just imagine. एक इंसान, अभी 20 लोग तो हम इसी ग्रुप में है, and we are talking about the people in the world. Every person releases 4.5 metric tons of carbon dioxide. So just imagine कि एटमॉस्फेयर में कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड है. अब इसको हम डिक्रीज तो नहीं कर सकते. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन?
इवन इफ यू यूज दिस व्हीकल्स, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल एक्सेलिंग. व्हाट अबाउट दैट? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर तो जाना चाहिए ना. Yes. Grow more trees. Trees are the only saviors of our life. जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ट्रीज विल टेक इट अवे. तो ट्रीज तो हमें डबल बेनिफिट करते हैं, है ना. दे टेक ऑल द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन रिटर्न दे गिव अस ऑक्सीजन which saves our life. So trees are only the option. See the last line. 100 years ago, the amount of CO2 was 275 ppm. ppm means part per million. अंडरलाइन करो एंड राइट द फुल फॉर्म. वैसे आगे आएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ppm, द फुल फॉर्म इज पार्ट, PART, पार्ट पर मिलियन. Okay, so see the sentence. 100 years ago, the amount of carbon dioxide was 275. Today it is 350. Just imagine 100 years के अंदर so much amount of carbon dioxide has increased in our atmosphere. राइट. चलो ppm कुछ भी हो, हम उसका यूनिट कितना भी हो, कितना भी मेजर करते हो, बट इतना तो आप देख सकते हो कि 275 में से 350 हो गए, है ना. सो यू कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग. यस. ओके, गो टू द नेक्स्ट पेज. ppm means part per million. For example, 280 ppm means 0.28%. अगर आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करो तो. Now you can see the graph given to us. ग्राफ करते हो मैथ्स में? आएगा. ओके. Now you can see that there are two lines in the graph. One is blue color and another is red color. Can you see? ओके, चलो ब्लू है, रेड है, येलो है, पिंक भी है, कुछ भी है, लेकिन वन थिंग इज क्लियर दैट द ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स. लाइन जो है धीरे धीरे ऊपर जा रही है ना. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ? ग्लोबल टेम्परेचर. तो लाइन से हम इजीली देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऊपर ही जा रहा है. सी द इयर्स गिवन इन द horizontal line. 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000 में देखो किधर पहुंच गया, है ना. The blue line shows annual temperature and the red line shows the average of 5 years. तो डेली लो कि एनुअल लो, 5 years लो, 10 years ले लो, whatever. But one thing is clear from the graph that the temperature is increasing. Yes or no? Yes? Okay. Now, how does the temperature increase? You have been given a box below. Okay? Study the table given. क्या लिखा है? Study the table given. Above है कि below है? Below है, तो पहले तो वो grammatical mistake है, वो change कर लो. It has been given. Study the table given above. Actually table above नहीं है, below है. Cancel the word above and write down below. The return, may have you made the changes? Okay. So study the table given below. State how much are we responsible in adding to the temperature of the earth. हम लोग का कितना contribution है टेम्परेचर इंक्रीज करने में, है ना. हम बोल रहे हैं कि वी आर कटिंग द ट्रीज, तो हम क्या बोलते हैं कि हम कहाँ कोई ट्री कट कर रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इनडायरेक्टली वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. हम क्या क्या करते हैं? सी द कॉलम्स गिवन. प्लेस और थिंग, time and proportion of gases released that aggravates the greenhouse effect. Aggravates मतलब increases. Underline the word aggravates and write the meaning increases. वो टेबल के टाइटल में लिखा है, देखो लास्ट कॉलम में, aggravates.
Did you find the word? Increases. Right? So just check the first column. Thermal power station, मोटर कार, एसी, टीवी, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, फ्रीज, ये सब तो हम ही यूज करते हैं ना, है ना? ये तो कोई फैक्ट्री में या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करता है ऐसा तो नहीं. ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन ईच एंड एवरी हाउस. और इन चीजों से ईयरली या डेली कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेट्स सी. थर्मल पावर स्टेशन 200 MW. MW means megawatt. Write the full form. Megawatt. Megawatt is the unit of measuring this power. Okay, unit of measuring power is known as megawatt. तो थर्मल पावर स्टेशन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आपको पता है कि वहां पर मशीन्स चालू होते हैं पावर स्टेशन में. तो वो मशीन्स जो है वो 1 ईयर में दे प्रोड्यूस 9 लाख टन ऑफ हार्मफुल गैसेस. 9 लाख टन ऑफ हार्मफुल गैसेस. जस्ट इमेजिन एवरी ईयर. देन कार जो हम यूज करते हैं, एवरी ईयर इट प्रोड्यूसेस 17 crore टन. What does it produce? Harmful gases, carbon dioxide, carbon monoxide, CFC, all these things. Okay? AC, on an average 2 hours. अगर सिर्फ हम 2 घंटे AC चालू रखते हैं, then also in 1 day it adds 2230 kg of harmful gases. अब जस्ट इमेजिन एक एसी का ये रिजल्ट है, तो पूरे कंट्री में कितने एसी, लाखों करोड़ों एसी है, पूरे वर्ल्ड में कितने एयर कंडीशनर्स है. सो कैन इमेजिन हाउ मच हार्मफुल गैसेस आर एडेड टू द एनवायरमेंट. देन ट्यूबलाइट, कंप्यूटर एंड रेफ्रिजरेटर डेली 88 kg, 130 kg, 920 kg. टेलीविजन जो मैं भूल गई, जो अभी जनरली पूरे दिन चालू रहता है, 190 kg. So this table explains us that we as citizens also add to the greenhouse gases by the use of daily equipments. Am I clear? Dhanvi, Dhruv, Dhruvi, Maithil. Is there anything you do not understand in this table? Anybody? Yes, Radhika is raising the hand. Radhika, bolo. So this shows the increase in the methane level from 300 to 1700. First is exhaling of animals and other living organisms. And what is the amount? 14 crore ton. Paddy cultivation. Paddy हमने last year learn किया था. Paddy means which crop? Yes. Underline the word paddy and write the meaning rice cultivation. Now जब भी आप राइस कल्टीवेट करते हो तो उसमें जब केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हो, उसमें आप जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालते हो, that also releases methane gas to about 15 crore ton. And the last is decomposition of the biodegradable waste. Now ये शायद आपने साइंस में पढ़ा होगा, biodegradable waste. Have you learned this? Yes. When the decomposition takes place in the internal layer of the earth, and when all the waste gets decomposed mixed with the soil, so this process also releases methane as high as 7 crore ton. So due to all these activities, these are the 3 main activities which have resulted to such a large increase in the methane gas. Any doubts? There is some more information given to us. All the things used by human in 1 day, ये खास ध्यान से read करो. All the things used by humans in 1 day has 80% of air in it. A man breathes 22,000 times every day. जब आप inhale exhale करते हो तो पूरे दिन में a normal human being inhales and exhales 22,000 times. In this way, a man consumes 16 kg of oxygen from the environment per day.
इतना सारा ऑक्सीजन ले लेते हो और इतने सारा कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हो एटमॉस्फेयर में. So just imagine that every person, there are so many people in the world, all of them release carbon dioxide. ये तो सिर्फ breathing की बात है. बाकी vehicles and factories and ये सब चीजें को कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग. So you can imagine how much of the harmful gases are thrown out in the atmosphere. You understand? Yes, Astha, what is your doubt, Astha? Yes, there was a sufficient quantity of methane in that Bhopal gas tragedy. Okay. Then another harmful gas is nitrous oxide. The proportion of nitrous oxide has increased from 270 to 390, which is again a harmful gas. And CFC, due to the use of foam, प्लास्टिक फोम, आपने फोम देखा है ना, वो स्पंज जैसा होता है, वो जनरली इसमें पिलोज में या ब्लैंकेट्स में होता है. Have you seen this foam? A soft material. Due to the use of foam, plastic, refrigerators, AC, circuit aerosol spray. अब ये circuit aerosol spray क्या है? It's given in the bracket. The minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol. Right? छोटे छोटे जो हम जिसको हम बोलते हैं कि dust particles जितने होते, very small. But these all particles, they also have lot of CFC gas inside it. कितना छोटा? 1 micron to 10 micron. Micron is something which you cannot see with your naked eyes. Okay, but they do have CFC gas inside it. There has been an increase in the CFC, and especially जो हमारी डे टू डे इम्प्लीमेंट्स है, जैसे अभी हमने लर्न किया रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, मोटर कार, these all instruments, they release a lot of CFC. Am I very clear, all of you? Okay, again there is an information given. Let's see. Dharmaj Parshva Aryan, turn on the videos. As per the resolution passed by the UN meaning United Nations, on 23rd January 1995, 16 September is observed as the Ozone Day. This you have to remember as your MCQ. 16 September is the Ozone Day. जो अभी आएगा, है ना? उस दिन आप मुझे सामने से बताओगे कि मैडम आज ओजोन डे है, ठीक है? And 1980, year 2007 was the hottest year. Right? पूरे हिस्ट्री में 1980 was listed as the hottest year. और उससे भी ज्यादा हॉट कौन सा ईयर था? 2007, which was listed as the hottest year till today. Okay, and due to this, the global warming is getting added to the environment day by day, year by year. Now, what happens because of global warming? हमें पता है कि global warming is harmful, it is dangerous. तो इससे हमें क्या बोलते हैं, losses होते हैं, that we are going to learn. Okay, सबसे पहले you can see the glacier given to you. You know what is a glacier? Yes, a simple meaning, glacier means a frozen river. ठीक है, a frozen river is known as a glacier. तो अभी see the picture of 2001. You can see the glacier. With 2003 and 2006, कलर पर से आपको पता चल सकता है कि वो धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है. Can you see this? और ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हो कि आइस मेल्ट होके रॉक्स दिखने लगे हैं. Can you see this? Okay, now we'll see the reading part. Changes are observed in the growth and development of the vegetation. Vegetation here means crops. Fruits है, flowers है, vegetables है, सभी में आप changes देख सकते हो.
है ना. Certain species of birds are now disappearing, such as sparrows and vultures. I think you know what are sparrows and what are vultures, है ना. These birds are disappearing. पहले तो क्या है कि घर के पास कितनी सारी स्पैरोज दिखती रहती थी. नाउ इफ यू सी दैट स्पैरोज उतने नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. स्पैरोज कैन नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हाई टेम्परेचर. हम तो क्या है कि एसी चालू करके बैठ जाएंगे, हमें टेम्परेचर बहुत अफेक्ट नहीं करेगा, बट बर्ड्स एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड. ओके, यस राधिका. Yes, yes, yes. Point over, yes. Yes. So certain species मतलब varieties. This I think we had learned last year. But फिर भी just write the meaning. Species meaning varieties. Certain varieties of birds are now disappearing. 2000 glaciers of Himalayas have receded or melted. We know Himalayas remain snow covered throughout the year. उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, बहुत सारे ऑल हैव स्टार्टेड मेल्टिंग और एटलीस्ट रिसीडिंग. मतलब धीरे धीरे उनका जो स्नो कैप है वो रिड्यूस होता जा रहा है. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? यस. हाँ, यस. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. अभी तो ये सिर्फ ये ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, स्पैरोज आर डिसअपियरिंग, ये तो कम है. अभी दूसरे पेज में देखो आपको 15 और इफेक्ट्स दिए कि ग्लोबल वार्मिंग से हाउ इज द एनवायरमेंट गेटिंग डिस्टर्ब. ओके, let us see starting from the first point. There has been an increase in natural calamities like famine, cyclone, excessive rain and floods in the last 10 years. हमने नेचुरल डिजास्टर्स वाला पूरा चैप्टर लर्न किया प्रीवियसली, है ना. तो यही नेचुरल डिजास्टर्स दे आर इंक्रीजिंग सिंस लास्ट 10 years. पहले इतना फ्लड या इतने फेमाइन, इतने साइक्लोन नहीं हुआ करते थे, बट नाउ द एनवायरमेंट इज चेंजिंग सो मच दैट the calamities are seen regularly or frequently. Okay, second point. The places receiving heavy rainfall are now experiencing less rainfall. Rajasthan and Dubai experienced heavy rain and there is scarcity of rain in Cherrapunji. Now Cherrapunji is a city in Meghalaya which records the maximum rainfall in the world. I repeat, maximum rainfall in the world. वहां पर आजकल वाटर शॉर्टेज चल रहा है. एंड राजस्थान एंड दुबई विच आर डेजर्ट एरियाज, दे आर रिसीविंग हेवी रेनफॉल. तो डू यू थिंक देयर आर एनवायरमेंटल चेंजेस टेकिंग प्लेस? ये लॉट ऑफ. ओके, थर्ड पॉइंट. द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज गॉन डाउन. यू नो व्हाट आर पल्सेस? राइट, जिसको हम बोलते हैं कठोल. ज्यादातर जिसमें आता है चना, मग, मठ, वाल, ऑल दीज आर नोन एज पल्सेस. तो पल्सेस आर the pulses do not get the nutrition from the soil, they do not get the proper sunlight from the nature, and due to this the production is decreasing. Okay, the level of groundwater has decreased. When you dig the land you get water. तो पहले तो क्या इतना dig करते थे और पानी फाउंटेन की तरह बाहर निकल जाता था. But nowadays you need to dig a lot of area in the land. You have to go very deep and then you find the groundwater. I think you all know what is groundwater. Okay? Then the next point. The melting of glaciers. Now I think you all know what are melting of glaciers. The melting of glaciers has increased the water level in oceans. This has aggravated the erosion of coastline. Now what happens? As soon as the snow melts, it gets converted into water, and water goes and mixes with the ocean. So ocean का water level it is increasing day by day. और इससे क्या होता है कि ocean water comes to the coastline, और coastline पे जो भी materials है वो erode हो जाते हैं, washed away हो जाते हैं. Okay? Underline the word erosion.
meaning washing away. Erosion meaning washing away. Yes, this in results into the floods. ओके और जब फ्लड आता है तो सब कुछ इरोड करके वॉश करके लेके चला जाता है. Any doubts in this point? Okay, see the next point. Human beings will become victims of dehydration and malnutrition due to the increasing temperature. You know that बहुत सारी diseases increase हो रही है ना. Victims means you suffer. आप शिकार हो जाते हो. Animals के शिकार नहीं, disease के शिकार. What are these diseases? Dehydration मतलब body में water क्वांटिटी कम हो जाती है. माल you don't get nutritious food to eat, and you know that when you eat malnutritious food you always have health problems. है ना, बाहर का खाना खाते हो तो that is not so pure as your mother makes at home, and this results in lot of diseases. So increased temperature results in the disease also all over the world. Any doubts? See the next point. There will be changes in the cycle of seasons. अब जनरली हमें पता होता है कि जून जुलाई the rainy season starts. From October November the winter starts, and from April the summer starts. Now this cycle is getting disturbed. कभी भी in temperature increase हो जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है. When it is winter it is very cold, right? So there will be changes in the cycle of seasons. The characteristics of summer and winter season will change. Actually will change, it has already changed and we are experiencing it. Yes or no? Yes. और फिर नवंबर में जब रेनी सीजन खत्म होने को होती है, दैट टाइम इट रेन्स हेवीली. ओके, सो दीज थिंग्स आर एक्सपीरियंस. यहाँ पर लिखा है विल चेंज बट इट हैज एक्चुअली चेंज्ड. एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? Yes, because their videos was off.